hi, hello guys, a very good afternoon to all of you. This is Deveeka and I welcome you once again to the session of Board Brahmastra. Who all are excited? So who do I have? Hey, hi Status King, hi Pratna, hello Ashok, hi Gauri and Sudarshan. A very good evening to all of you. राइट और स्टूडेंट्स किसी यू ज्वाइन फर्स्ट ओके पता नहीं मुझे पहला जो दिख रहा है द कमेंट राइट उसके हिसाब से बाय फार वी हैव फिनिश्ड व्हाट आई नो दैट हाय महेंद्र हेलो जी गुड इवनिंग अच्छा ये बात बताओ मुझे बाय फार व्हाट वी हैव स्टडीड अभी तक हमने क्या पढ़ाई किया है ओनली पढ़ाई सिर्फ काम की बातें होगी यहां पे नो बकवास You hate my mind? I hate my mind. Why? Thank you guys. I love this subject too. Thank you, Pranjali. Thank you. Right. So now, yes, I do have everybody over here. A very exciting session and a very exciting chapter जिस पे बहुत memes बनते हैं. The mimic material chapter, how do organisms reproduce? But that's not all. That's not all. It is the story of every living organism on this earth. It is the story of you, right? Whose story it is? Thank you, Jay. आज ये सारे बच्चे मेरे दोपहर वाले सेशन में भी दिखे है ना? So very warm welcome to all of you. A very warm welcome to all of you. जी हाँ, तो चलो शुरू करते हैं about the reproduction, right? So आज in this particular session in this 1 hour we are going to tackle with the entire chapter. पूरा का पूरा chapter हम खत्म करेंगे and जितने भी मैं questions बोलूंगी वही topic, those topic would be asked in your examination, right? Fantastic. Okay, ठीक है. अरे मेरा accent western है. ऐसे कैसे बोलत हो बा तुम हमारा एक्सेंट बहुत हिंदी वाला है ठीक है चलो सो अब ये सब जाने पहचाने चेहरे आपको दिख रहे हैं व्हाट इज सो कॉमन अबाउट देम गाइस व्हाट इज सो कॉमन अबाउट देम कैन यू टेल मी इतना कॉमन क्या है कितना मार्क का होगा एग्जाम में सो यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सैंपल पेपर एनालिसिस जो किया है उसमें 4 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आ ही गए थे यस वेरी गुड लियाकत कह रहे हैं कि दे ऑल लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स है ना ये सारी बहुत जानी मानी हस्तियां हैं एंड दे ऑल लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट अब ये जो पेरेंट के साथ सिमिलैरिटी है ये क्यों आती है राइट ये हम पढ़ेंगे तो आज का हमारा टारगेट क्या है आज का हमारा टारगेट है टुडेज आवर टारगेट इज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस दिस इज अ कंप्लीट माइंड मैप मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि आप एट अ ग्लांस लुक ले पाओ राइट ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले पाओ बढ़िया सा ठीक है तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो इस चैप्टर में फर्स्ट वी टॉक अबाउट asexual reproduction, we talk about sexual reproduction in plants, then we talk about the sexual reproduction in animals और animals में हम बात करते हैं female reproductive organs, male reproductive organs, their gametes और उतना ही नहीं we also talk about reproductive health, right? So from this segment From this reproductive health segment, the concept based questions जो हम कहते हैं right या फिर reaction based question. So इस बार बोर्ड एग्जाम में 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कौन से एक तो है पूरा का पूरा आपका जो केस स्टडी टाइप है एंड द अदर वन दैट इज अ न्यू एडिशन इज द रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल दूंगी ठीक है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसके एग्जांपल देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी ठीक है चलो
So you guys told me कि those all, you know, शाहरुख खान का बच्चा शाहरुख खान के जैसे, संजय दत्त का बेटा बिल्कुल उनके जैसे, राइट, सारा अली खान बिल्कुल फराह खान के जैसे, उनके इतने similarities. Why is it there? Because fantastic, SS Khan, welcome over here. So now here ये क्यों है? Why are they so similar? Because their information, our characteristic information, our entire blueprint is what? What is the blueprint? The blueprint in us, in organisms, is its DNA. DNA क्या है भैया? Deoxyribonucleic acid है. It is the hereditary material, the genetic material which stores entire information for you. Right? So कोई भी reproduction होने दो, let it be asexual reproduction, let it be sexual reproduction. सबसे पहला क्या है? What is the first thing? What is the first thing? The first thing over here is to copy the content, copy the information. Control C, Control V करने वाले हैं पहले हम. लेकिन it is not that easy. It is not that easy that you just copy your DNA without any errors. ऐसे नहीं हो सकता है. There could be the error, right? There could be the error. DNA RNA क्या है? हेरिडिटरी चैप्टर में हम बात करें डिटेल में. अभी के लिए ये समझ लो, RNA जो है वो DNA से ही बनता है and RNA is like a message of the DNA. और बाकी मैं सारी की सारी डिटेल में आपको हेरिडिटरी वाले चैप्टर में बता दूंगी. राइट? ठीक है? तो यहां पे क्या होता है? हम पहले DNA को कॉपी करते हैं. We copy the DNA. DNA क्या है? इंफॉर्मेशन है. So if we want somebody or a species, जैसे कि I told you कि ह्यूमन के बच्चे बिल्कुल कई सारे ह्यूमंस के बच्चे उन्हीं के पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं. इफ वी टॉक ऑन अ ब्रॉडर सेंस, तो मैंगो के पेड़ का बच्चा मैंगो का पेड़ ही होता है ना. आम का पेड़ आम का पेड़ ही उगाएगा. रोज का प्लांट सेम थिंग. कुत्ते का बच्चा, you know, dog will give rise to the dog itself. The elephant will give rise to the elephant baby. ऐसा तो नहीं है कि elephant can make a fish baby, right? So now these things are due to the DNA. DNA क्या है? Information है. तो चाहे asexual reproduction हो, sexual reproduction हो, everybody, the first step is to copy the DNA. And why? Why copy the DNA? Because it is the information. So अगर हमें पूछते नहीं चीजें सबसे पहले कुछ मिलती है, तो that is your hereditary, the DNA, and this DNA brings in all the similarities, differences, right? It brings in the good things from your ancestor. It also brings along the hereditary disorders. We'll talk about it in the hereditary chapter more. Now when we talk about DNA, चलो एक fun fact बता देती हूँ DNA के बारे में. DNA इतना लंबा होता है and the process of copying of it is so fast कि there could be certain kind of error, right? यहाँ पे कई सारे errors हो सकते हैं and because when there is an error over there, क्या होगा? कुछ नया ही तैयार हो सकता है. Some different characteristic you can get, and this brings in what, my dear students? That brings in the variation. Variation is nothing but the differences, right? Variation is nothing but the differences. So ये DNA था, ये parental DNA है, right? This is the parent DNA. ये क्या है बेटा? ये parent DNA है. When the cells, you know, decide to multiply, when it's it want to divide it, now first step is copy. तो ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कॉपी बनाया जा रहा है. जेरोक्स मशीन जैसे ही कुछ, राइट? अब कॉपी बनाया जा रहा है. नाउ द करेक्ट कॉपी ओवर हियर इफ यू सी वाज ग्रीन, ब्लू, ग्रीन एंड लाइट ब्लू. यहाँ पे क्या हो गया? अ म्यूटेशन हैज ऑकर्ड. यहाँ पे कॉपी इसका गलत हो गया, राइट? बिकॉज ऑफ दिस, नाउ दिस वाज सपोज टू बी अ प्रोटीन टाइप ए. अब ये मानो बन गया कुछ और टाइप का प्रोटीन, राइट? ये प्रोटीन टाइप बी बन गया. सो एंटायर कैरेक्टरिस्टिक हैज बीन चेंज्ड, राइट? एंटायर कैरेक्टरिस्टिक. नाउ व्हाट वुड हैपन? इट वुड चेंज. प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा.
Now guys, question time. Reproduction helps in providing stability to the population of a species. Justify. Reaction based question my dear student. इसे क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहते हैं? Reaction based question, right? What it is made up of? What, the DNA? You need not know what it is made up of, but still it is made up of the base pairs and nitrogens, right? So it is made up of adenosine, guanine, cytosine, thymine. अभी आप छोड़ दो, अभी बोर्ड पे ही ध्यान देते हैं हम लोग, है ना? फिर आगे वाली चीजें हम पढ़ेंगे, right? Gauri is answering, it helps as many as new variations help in adaptation of a species. This is a 3 marker. ये 3 मार्क वाला क्वेश्चन है, 3 मार्कर, राइट? सो आज मैं जब बात कर रही थी बच्चों से, तो मेनी ऑफ यू हैड दिस इशू कि यार इसमें 3 मार्क में कितना आंसर लिखना है, राइट? आई स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, जैन, नन ऑफ द फॉरेन, मेनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, राइट? हाई वोट, हाँ जी, क्लास 12 में पढ़ेंगे. सो हाउ डज इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी? मैंने आंसर यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है सो दैट यू गेट इट इन योर नोट्स. इन द, कहाँ पे मिलेगा? कौन बताएगा बाकी बच्चों को? प्लीज हेल्प योर फ्रेंड्स. कहाँ पे मिलेगा ये वाला सारा आंसर आपको? राइट? सो अगर मुझे इसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना है ना, सिंपल लैंग्वेज में समझाना है, तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि मानो अगर कोई स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया है एंड सडनली देयर इज अ टेम्परेचर चेंज, most of the bacteria will die, but the bacteria who has by mistakenly got a variation of adapting into a new environment, new temperature, then that will survive. So 3 मार्क के 3 पॉइंट मैंने लिख के यहाँ पे आपके लिए लिखा है, right? But what is the length of the DNA of all the body cell? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है एसएफ खान. Basically, if I pull out all the DNA from all the cells of your body and put it end to end, you can take 2 rounds of your solar system. You can take 2 rounds of your solar system. इतना लंबा DNA होता है. Right? So that is why when we copy, there could be some variations, and due to this variation, there could be new species also being formed over there. Right? तो यहाँ पे क्या होता है? New features जब add हो जाते हैं, what are the significances of the variation? PYQ. रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये सीबीएसई वालों का कि वेरिएशन के फायदे नुकसान बताओ, वेरिएशन क्यों चाहिए ये बताओ, राइट? सो इट ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ दिस न्यू characteristic over the period of time, the new species can also get evolved, right? No, all organisms do not need tissue, beta. No, they do not. Right? So this new species may also be adapted to the changes of the environment, so it can give additive characteristic so that the species can adopt and stay happily into the changes happening in the environment. इतना ही नहीं, यही हमें बंदर से इंसान भी बनाया है, राइट? सो जस्ट किडिंग, वी आर नॉट. कोई अगर आपको बोले ना कि आप बंदर हो, नहीं है यार, हमारे एंसेस्टर बंदर नहीं है, गलत है ये बायोलॉजिकली, ठीक है? बट स्टिल इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑल्सो हैपन, न्यू कैरेक्टरिस्टिक कीप accumulating and boom, we are all modified ones, right? Chalo. So now mode of reproduction, there are 2 modes of reproduction. 2 modes of reproduction are the asexual mode of reproduction, sexual mode of reproduction. Sexual mode of reproduction, as you can see, you have mother and father. So 2 parents are involved. Asexual reproduction, single parent is sufficient over there. Right? Single parent are sufficient over there. Now,
reproduction. What is reproduction का definition? So this definitions will not be asked to you just like that. Define reproduction. कोई नहीं पूछने वाला. The pattern has changed. कोई नहीं पूछने वाला. But then why do you need to study it? Because when they ask about reproduction in a lengthy question in the section E, section D, at that time you will have to start your answer by defining reproduction, right? So reproduction is for producing the similar individual. So by biological definition, reproduction is a biological process wherein a new individual is formed, right? So this is only in plants. Which one, beta? Which one? Which one is only in plants? Tell me. So it also increases the population of a particular species, right? So as an individual, reproduction is not important. So if somebody thinks ki no, I do not want to reproduce, nothing is going to be wrong with you. And that is why this is not included in the life processes. Right? Vital life process nahi hai. It is a life process but not a vital one. But if there is some Akashvani and in that the cats are said ki cats आज से reproduction बंद, कोई babies नहीं बनाएगा, तो क्या होगा? After few years ये सारी cat बूढ़ी हो जाएगी, बूढ़ी हुई cat मर जाएगी and the cats will get vanished. So as a species, right? As a species यहाँ पे आपको नुकसान पहुंच सकता है. The species can get vanished, right? Right? Now, generation of variation among living organisms. अब हम as a Homo sapiens, we all are Homo sapiens. Are you a Homo sapiens? Yeah? I hope you are a Homo sapien. आपके behavior से तो लग रहा है कि आप लोग Homo sapien ही हो, है ना? So if you are Homo sapien, if you are Homo sapiens, yes, it happens, right? Homo sapien is the scientific name of humans, right? So we all are Homo sapiens. Humans है हम लोग. But as a human also, we have so many different kind of variations. So the Western people, right, on the other side of our globe, they are very tall, very fair, right? Some of the others are very dark in complexion, right? Their features are different. They have very curly hairs, right? Their jaw structure, the brow structure is different. On the other hand, the Asians, we are different. है ना? So when you look at them, you know, oh, this is a foreigner. कैसे पहचान लेते हो? How do you recognize them? Because there are variations in a human as well, right? Human being में भी variations है. I hope ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. समझ में आई कि नहीं आई बात? Yes? वीडियो स्क्रैच हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, देखते हैं. सो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट गाइस, इंपॉर्टेंट, फटाफट कर लेते हैं. Asexual reproduction is found in the lower organism, and when these are found in lower organisms, that the reason behind it is that they are simpler, and that's why they have simpler organs as well. So in them it is possible. So the asexual reproduction is found in some of the multicellular organisms as well, like the plants or the algae. Apart from that, most of all of your unicellular organism, they show, like your microorganisms, some of the fungi, the protozoans, वो क्या दिखाते हैं? वो asexual reproduction they show, right? So fission, budding, sporulation, regeneration, fragmentation, all of these are the types of asexual reproduction. We'll see. फटाफट क्वेश्चन टाइम. इन अ rhizopus, ये भी एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है सीबीएसई वालों का. ठीक है, इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन the first section, section A, 1 marker में. Right, the rhizopus tubular thread-like structure bearing the sporangia at their tips
is called as tubular thread-like structure bearing the sporangium. Yes, fantastic, fantastic. इसे क्या कहते हैं? Very easy, very important. Hyphae, right? Hyphae. Why did I include this question? It is to bring it to your notice कि you have to learn about the fungi. Yes, very, very good. Right. So is in the fungi, right? In the fungi जो भी कह लो. So in there you have a special organ called as sporangia, which stores the spore so long till there is favorable condition. When there is favorable condition, it just boom, and all the spores in thousands of number are spread, and each spore has the capacity to give rise to the new individual. So type of asexual reproduction at one shot guys for you, right? सबसे पहले बात करेंगे binary fission. नाम ही बताता है binary, एक का दो, right? So here what would happen? One cell will divide into two equal halves and you will get two new daughter cells. Examples: bacteria, leishmania, amoeba. Bacteria, prokaryote. Leishmania, amoeba, your protozoans, right? ये क्या है? Protozoan है. Leishmania causes the काला आजार. Amoeba तो आपका दोस्त है, आप जानते ही हो. Then multiple fission in plasmodium. Guys, plasmodium क्या करता है? What does it cause? Can you tell me? Write it in the chat box. ठीक है? So multiple fission में क्या होता है? The cell is there. The cell का nucleus is there. It just forms a cyst. During the formation of cyst, what's happening over here? There are multiple division of the nucleus, not only into a little bit of cytoplasm is surrounded, right? Fantastic. Ash Bhai, then Angel, Mahendra Jay, right? Correct. Malaria cause करता है ये, right? इसे हम कहते हैं cyst, and then it breaks open, right? और सारे के सारे plasmodium boom out in your blood and they infect another blood cell. That is multiple fission. Then you have budding in yeast and hydra. Yeast is a fungi. बच्चा ये मुझे बताओ कि hydra क्या है? Plant है, animal है, क्या है hydra? What is hydra? Is it a plant? Is it an animal? Right? बताओ जरा hydra क्या है? So meanwhile I'll explain budding. In budding what happens, you can see over here, this is the hydra. Hydra will generate a bud. This bud will outgrow till such a time that it can take its own food and be independent. That time it starts, till then it keeps taking up the nutrient from the parent and then it detaches and a new hydra is formed. Fantastic. So I am getting some interesting answers over here. Subra Gupta is saying aquatic plant, cactus, woo, Monera. Welcome बच्चा, common student watching this, fantastic. यहाँ पे the hydra is an animal. It's a porphyrin, right? ये एक animal होता है, आपकी गलती नहीं है. किताबों में इसका डायग्राम ऐसा हरा भरा सा और ऐसा दिखा देते हैं ना. It is a sessile, मतलब कि non motile animal. खैर ये तो बस कुछ और थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन था. काम की बात पे आते हैं. BKB बहुत काम की बात, right? Fragmentation in Spirogyra. ठीक है, Spirogyra is a algae. Spirogyra क्या होता है? Algae होता है. If you watch the Spirogyra under the microscope, मस्त स्प्रिंग जैसे इसके अंदर वाला मटेरियल जो क्लोरोप्लास्ट है वैसे स्प्रिंग जैसे दिखता है, right? That's why Spirogyra. That is why this name Spirogyra. जब भी ये टूटेगा, the new fragment will form a new Spirogyra,
रीजनरेशन इन प्लानेरा, अगेन एन एनिमल का इतना इतना होता है, काफी बड़ा भी बन जाता है, जहां से भी इसे काटो. नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमिंग योर वे, राइट. सो इसे अगर काटो तो ये तीन प्लानेरा बन जाएगा, राइट. ये 3 प्लानेरा बना देगा. नए, ठीक है. Interesting question is coming your way. Just wait. I'll finish off the spore formation. Spore formation in your fungi, right? Spore formation is a very strong method of regeneration. Of asexual reproduction. Why? Because that gives the fungi the capacity to reproduce in large amount, and because of which it is difficult to control the outgrowth of fungi when compared to bacteria. That was a question in previous year question, right? The next question that I was going to ask you is, भैया जब हम बात करते हैं binary fission, multiple fission, budding, fragmentation, spores, regeneration on the other hand is not considered to be the true mode of asexual reproduction. I want the answer in the chat box right now or even after the class. Doesn't matter. जो बच्चे बाद में देखते हैं उनको भी ये सवाल जारी है, ठीक है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है ना, ड्यूरिंग द सेशन या फिर while rewatching the session, post your doubts into the chat box. We are monitoring it and we will answer your chat box में आया हुआ डाउट तुरंत. Do not worry about it. And Jay has answered it correctly. Jay has answered it correctly. Fantastic, Jay. Good job. Good job. Chalo. Next one. What is regeneration? Give one example of an organism that shows the process and the organism that does not show the process. Why does regeneration occurs in the latter? Right? And that is do fungus मैरिज कोरोना? नहीं बेटा, इट डज नॉट, ठीक है. दैट इज नॉट पॉसिबल. दिस इज योर HW. ये आपका होमवर्क है, ठीक है. ये होमवर्क का आंसर्स मुझे चाहिए चैट बॉक्स में. स्क्रीनशॉट ले लो और इसे सॉल्व करो, ठीक है. ये एक PYQ है, 17 का क्वेश्चन है एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि रीजनरेशन से एक क्वेश्चन आएगा, राइट. ओके, नाउ let's go to the plant asexual reproduction, which is called as vegetative reproduction. Why is it called as vegetative reproduction? Very simple. Vegetative मतलब क्या? हम कहते हैं यार यहाँ पे तो vegetation ही नहीं है. It is completely deserted land. Vegetation, we use it in the form of greenery. Here also, apart from the flower. अगर flower को flower, right? So flower is the sexual reproductive organ in the plants. It's a sexual reproductive or sexual reproduction के लिए होता है ये, right? Sexual reproduction के लिए होता है ये. So apart from this, if root, stem, leaves कुछ भी यूज किया जाए तो in that case we call it as vegetative propagation. That's called as vegetative propagation. Now there are two ways. One is natural way, another is artificial method of reproduction. Now vegetative propagation happening by natural ways. So here it is by budding, fragmentation and spore formation. Spore formation you can see in the plants like fern, है ना, pteridophytes, the spores ferns में होता है. Fragmentation, can you give me the example over here? Budding also, please give me the example over here. I'll write it down, come on. Potatoes, right? Fragmentation के लिए you can use any example of the algae over here, right? Loving the session? Hit a like button please. Artificial method is cutting, grafting, layering and micropropagation. क्या है मैं अभी बात करती हूँ, सबके बारे में बात करेंगे अब. Do not worry. Right? So vegetative पहले बता दो. Vegetative propagation 2013, 15, 16, 17, 18, 19 रेपिटेटिवली पूछा गया हुआ क्वेश्चन है. ओके,
repetitively around the topic, they do ask the question from this place. Note it down, mark it down. Vegetative reproduction is a type of asexual reproduction. Any other part is used. Leaf का reproduction is the example in Bryophyllum. Stem cutting for the rose, हम rose की cuttings लगाते हैं, seed नहीं होता है. Grafting in sugarcane. A very important question, a concept based question coming from vegetative reproduction for you people right now. I'm asking you the question. Be ready. Why do the rose plant or the hibiscus plant, even after having bisexual flowers, do not produce seeds? Why there are no seeds present in the hibiscus, that is your Chinese rose, जो आप प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल करते हो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एंथर एंड द गाइनोशियम ओवर देयर, राइट? क्यों नहीं होते हैं सीड्स उनमें? रोज में सीड्स नहीं होती है, हिबिस्कस में सीड्स नहीं होती है, बनाना में सीड नहीं होती है. Why there are no seed formation even after having a bisexual flower over there? Fantastic, right? So now answer it in the chat box. So growing the artificial way, right, we also can do tissue culture. और tissue culture को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर को ही हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं. सो यहाँ पे देखो ये स्टेम कटिंग का प्रोसेस है, वे वी कट एंड देन प्लांट इट. दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग. हम एक ब्रांच को झुका के जमीन में लगाएंगे, मट्टी उस पर ढक देंगे एंड देन द रूट्स विल स्टार्ट coming. We will cut this thing and new plant would be generated. Grafting में क्या होता है? You take a mother plant and यहाँ पे एक कट बनाते हो and then you put another plant का साइकॉन यहाँ पे लगाते हो. इन दोनों के कट अलग अलग बनते हैं and that's how you can actually mix two varieties, right? Okay. तो जय ने आंसर दिया है एंड सुभ्रा ने आंसर दिया है. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द सेम आंसर गाइज. ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर. स्टेम कटिंग इन द स्टोलन्स यू कैन सी इन द plants like your tuberous plant जहाँ पे rhizomes होते हैं, वहाँ पे ये देखने को मिलता है stem buds and leaf buds in the potato. As well as this is what ये पूछा भी जा सकता है. They give you a black and white diagram of this or a picture of it and ask you what it is, identify. So this is Bryophyllum, my dear students. ये Bryophyllum को क्या कहा जाता है common language में? Do you know? What is the name of Bryophyllum? Bryophyllum in common language इसे कहा जाता है mother of thousands. Okay, it's called as mother of thousands. So this mother of thousands, इसे mother of thousands का नाम ही इसलिए मिला है क्योंकि इसके पत्तियों के sides where you will see small plants coming and some adventitious roots also start coming from here. They fall off and then they form a new plant, right? Bryophyllum को बोला जाता है mother of thousands, right? तो अब आगे बढ़ते हैं. Wow, assertion and reasoning question. क्या है क्वेश्चन को पढ़े जरा. Clones are offspring of an organism formed by asexual reproduction. ठीक है? And clones have exact copies of their DNA as their parent. What is the correct answer for this now? मराठी में क्या बोलते हैं? सॉरी जय, नहीं पता बेटा मुझे. क्या बोलते हैं ब्रायोफाइलम को? शायद मैं पता करके आ जाऊँ नेक्स्ट टाइम. ठीक है. So, what are you guys saying? Both says A. Okay, others? Answers please. Over here. Not coming. Tarun says B. Okay, so
both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation कि the reason is not the correct explanation. A correct answer is A. ठीक है, क्योंकि asexual reproduction there is there is only one single parent, right? And so the same DNA is going to get copied and divided. So very little chance of variation. This is also a PYQ. इसी topic से there was a PYQ. This is a new question that I have formed over here for you people, right? So PYQ was what? कि where are the greater chances of variation, whether it is in the asexual or sexual reproduction. So where is it? It is in sexual reproduction where the variation rate would be high. Otherwise यहाँ पे तो the offspring is exact copy of the parent, so we call it as a clone. ठीक है. So these are the advantages of the vegetative reproduction. ये भी PYQ है, right? That's a PYQ, direct PYQ है ये. State the advantages of the vegetative reproduction, right? तो यहाँ पे vegetative propagation helps in producing plants which have stopped producing the seeds or they are about to die, right? It helps in increasing the population of a particular variety. It gives you the chance to grow them in special conditions, right? It can produce fruits and flowers which are of the same quality, right? It helps in growing the plants whose seeds are not available. All of this we have discussed already. ये क्या है? ये tissue culture है. Tissue culture is aka micropropagation. Micro is small, right? And propagation is growth. So growing the plant from any small piece of the mother plant is called as micropropagation. Micropropagation or tissue culturing is an artificial mode of asexual reproduction, a man-made reproduction of the plants. Board is harder than the O level? नहीं बेटा, it's not that harder. अभी तो काफ़ी easy बना दिया है. हाँ जी, लाइक पोटैटो बिल्कुल सही समझे आप बेटा, बिल्कुल सही समझे. बट यहाँ पे क्या होता है? आर्टिफिशियल मीडियम. हाँ, हम लैब्स में ये सब करते हैं. कहाँ करते हैं? लैब में. इन विट्रो कंडीशन वी डू दैट. चलो अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और प्लांट एंड देन एनिमल. फटाफट करना है हमें. मेरे साथ बने रहो विद द pace that I am going to go, right? So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है when the DNA is formed, right? The two cells combine and they will bring. So will the copy of DNA increase? तो हम में होते हैं 46, तो 46 का क्या डबल हो जाएगा number of chromosome? And in that case अगर ऐसा होता है तो what would happen to the cell, right? What would happen to the cell? So give me the answer in the chat box right now. अभी के अभी मुझे इसका आंसर बताए please, right? Please give me the answer कि whether it is yes or no and why so. Yes, you guys are saying no. Fantastic. अरे वाह मोहम्मद, congratulations. So why so? Why so? तो अब in sexual reproduction, DNA from the two individuals are combined and when there is a combination of two individual, आप देख पा रहे हो कि इनकी आईब्रो पतली थी और आईज ब्लू थे. तो बच्चे के पास मम्मा की आईब्रोज आई है और पापा के आँख आए हैं, राइट? तो आँख का कलर आया है. सो बेसिकली यहाँ पे देयर इज अ कॉम्बिनेशन. सो दैट्स व्हाई वी लुक अ लिटिल बिट ऑफ मम्मा एंड अ लिटिल बिट ऑफ पापा समटाइम. अगर आप दिखते भी किसी एक के जैसे तो अंदर वाले कैरेक्टरिस्टिक जरूर दूसरे के होंगे. ये तो बचपन से सुनते, जैसा बच्चा पैदा हुआ नहीं, अरे ये तो बिल्कुल आपके जैसे दिखता है, तो किसके जैसे दिखेगा भाई, राइट? ये तो बिल्कुल मम्मा पे गया है. तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिक्स नाम की कोई चीज है, अब जाएगा तो मम्मा पे ही ना, बाकियों पे नहीं जा सकता. तो अब यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन है. बाकी आप समझदार हो. तो यहाँ पे क्या होता है? दी gametes are fused and then we form a zygote and zygote give rise to the new individual. तब जाके एक नया इंडिविजुअल बनता है. ठीक है, तब जाके एक नया इंडिविजुअल बनता है.
right? So now during this time, how is it happening, where is it happening? So you guys were telling me correct answer मुझे मिला था बोर्ड से, महेंद्र से, right? काफी बच्चों ने दिया है. Yes, so यहाँ पे the reduction division happens, मतलब 46 क्रोमोसोम को हम काट के 23 बना देते हैं, हाफ कर देते हैं in the egg cell, in the sperm cell. Egg and sperm cells क्या होती है? Gametic cells. When they fuse together, there is fertilization happening and that's called as zygote. The original number is restored. This is the key word over here. Listen to me very properly. The original number is restored to 46 chromosome, right? Which is now stored in 23 ka pair, and then we get this cute little dude that is your new individual, right? Because why only 23? अगर पूरा का पूरा 46 क्रोमोसोम उसको दे दिया गया तो क्या होगा? 46 मम्मा का, 46 पापा का, and the number will become how much? Yes, same way both. That's the same way that you will explain. That is why you must be seeing कि मैं explain करते वक्त हिंदी में बात करती हूँ लेकिन फिर उसको एक बार इंग्लिश में बोलती हूँ. हाँ जी बिल्कुल, you get 100% marks. ठीक है, 92 बन जाएगा. Right. So I explain it. मैं उसको इंग्लिश में ज़रूर बोलती हूँ. The reason is because you have to write it in English, right? कई सारे बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं पेपर को, तो उसे कैसे लिखना है उन कीवर्ड्स के लिए listen to what I am explaining in English as well. Fantastic. तो 96 बन जाएंगे, 92 बन जाएंगे, 92 बन जाएंगे. अब 92 तो ये जनरेशन को हुआ, उसके बच्चे अगर हुए तो 92 plus 92 और बड़े हो जाएंगे. So in that case the DNA would not be able to get accommodated and extra information is harmful, so the cell will die, right? The cell will die. So इसीलिए 5:15 तक चलेगा सेशन बेटा, 5:15 तक चलेगा. चलो, so in plant sexual reproduction कहाँ पे होता है? This is for notes which you will get in the Telegram group. You can download it from over there. अभी flower is the sexual reproductive organ in the plants. What do we have? We have 4 whorls over here, right? 4 whorls over here. सबसे बाहर वाला जो होता है that's called as the sepal. Sepal is a green color whorl which protects the flower in the form of bud. जब वो bud में होता है, it is green color, it can do photosynthesis and it protects the bud. That the function of the sepal. Sepal के बाद आता है petal. Petal is the most beautiful part of the flower. It gives recognition. It is usually bright in color, helps in attracting the pollinators. अभी नो बकवास, ठीक है? अब बिल्कुल बकवास ही, अभी बिल्कुल फटाफट जाएंगे आप. So that is how petals का काम होता है. Then there is basically the stamen. नाम ही बताता है man है भाई, तो male reproductive part aka androecium. Then in center you have the pistil. Pistil is the female reproductive part made up of the stigma, style and ovary. आगे चलते हैं, ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे. Do not worry about it. Right, so ये रहा हमारा anther. Stamen का कैसा होता है? So stamen has a filament. Around the filament it has a lobe जिसे anther कहते हैं. It is usually a bilobed and inside this anther if we take a section वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है? If we take this kind of a section and here you will see the pollen grains getting formed. इसके अंदर pollen grains formed होते हैं. What are the male gametes in the plant? हम कहेंगे pollen grain तो गलत, ठीक है? Pollen grain is the part in which the male gametes are stored. Usually बच्चे समझ लेते कि pollen grain ही male gamete है. नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? pollen grain के अंदर male gamete रहते हैं. Alright? Anther, panther नहीं बेटा, ANTHER, anther, वहां पे लिखा तो था. तो अभी pistil में क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है and the ovules are there. इसमें gametic cells कौन सी है? Ovules are the gametic cell. The swollen part is the ovary. The tube-like structure is the style of it. And then there is stigma. नाम ही बताता है
स्टिग्मा स्टिकी है, सो इट इज बेसिकली फॉर the pollen grain to come and fall over it, right? Fantastic. So that's the pistil. अब fertilization कैसे होता है प्लांट में, especially if we talk about the flowering plants in the angiosperms. Angiosperms are also called as the flowering plants. So इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है. कैसा फर्टिलाइजेशन होता है गाइस? डबल फर्टिलाइजेशन. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली VIP इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा. पहले क्या होगा? पॉलिनेशन होगा. क्या होगा? पॉलिनेशन होगा. सबसे पहले पॉलिनेशन होगा. द पोलन ग्रेन्स विल फॉल ऑन द स्टिग्मा, राइट, एंड आफ्टर दे हैव फॉलन ऑन टू द स्टिग्मा, so that is called as pollination. The stigma has to be a compatible one. तो ऐसा नहीं कि मैंगो का रोज से हो सकता है पॉलिनेशन, नहीं होगा, राइट. मैंगो के एंथर मैंगो के फ्लावर पे ही गिरेंगे तभी होगा. So that is called as compatibility. Then the pollen tube is generated. इस प्रोसेस को हम कहते हैं the pollen grain germination, right? So the pollen tube will develop inside the style and will reach to the ovary. Once it reaches to the ovary, it will encounter itself with the egg cell, right? तो वहां पे होगी syngamy सबसे पहले. तो अब यहाँ पे the female germ cell are present over here, and now what will happen? The germ cell, the male germ cell, gametic cell, reproductive cell, सब एक ही है, right? It is all your gametic cells, reproductive cells only. So those pollen grains will fuse, the pollen grain में होने वाला male gamete will fuse with the female gametic cell, right? The female gametic cells which are present in the ovules, and what would happen there? There would be the zygote formation. Zygote formation leads to the new baby plant का formation. This is the story of fertilization in total. अब यहाँ पे क्वेश्चन पॉलिनेशन से भी आते हैं, बहुत फेवरेट टॉपिक है कि व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन भैया, राइट. सो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन गाइस? व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? When the pollen grains from the anther of the same plant falls on the flower of the same plant itself. Same flower के pistil पे जब वो गिरेंगे तो उसे self pollination कहेंगे. It could be the same flower as well, or it could be the same plant, दो different flowers. तो दोनों ही चीजों को हम क्या कहेंगे? दोनों ही चीजों को हम कहेंगे. सो अगर ये कंडीशन है, राइट, ये क्वेश्चन डायग्रामेटिक क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है. सो इसके एंथर से पोलन ग्रेन निकल के आए एंड फॉलिंग ऑन दी pistil of the same flower, same plant है, राइट. दूसरा फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तभी भी ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा. इफ द एंथर्स आर फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तभी भी ये सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा. देन व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन इज व्हेन the pollen grains from one flower transfer to another flower of different plant, then we will call it as cross pollination. For such kind of pollination, they depend on the agents like pollination by wind, insects or by birds. Your bats also help. तो animals भी help करते हैं. If they ask animal, you know what to answer is the bats. Okay? Okay, now PYQ. Explain double fertilization. Explain double fertilization. Preeti, why DNA is a blueprint? We have discussed it in the beginning of the session. आप rewind करके देख सकते हो सेशन के बाद. Fantastic, guys.
फर्टिलाइजेशन क्या है? तो चलो मैं समझा देती हूँ डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज गाइज द पोलन ग्रेन, ये आपका पोलन ग्रेन है, राइट? पोलन ग्रेन में क्या होता है? पोलन ग्रेन हैज दिस 2 मेल गमेट्स एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियाई प्रेजेंट। तो बेसिकली पहले से ये मेल गमेट यहाँ पे मौजूद नहीं होता है, दोनों एक एक होगा, एक ट्यूब सेल रहेगा, राइट? एक ट्यूब सेल रहेगा एंड एक मेल गमेट रहेगा, राइट? जैसे ही ये पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन, आई एक्सप्लेन इट ओवर हियर, या करेक्ट, फंटास्टिक, फंटास्टिकोस। सो जैसे ही ये यहाँ पे लैंड कर गया, सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियाई विल कम। ट्यूब न्यूक्लियाई हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब। Once the pollen tube reaches the ovum, ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव gametic सेल है, राइट? फीमेल सेल है ये। सो यहाँ पे now once it is coming over here, वो जो मेल गमेट था, it divides into 2, तो now it has got 2 मेल गमेट्स। कितने हुए? 2 मेल गमेट्स, राइट? 2 मेल गमेट यहाँ पे बन जाते हैं। The first one mates with the synergid cell. synergid cells होती है यहाँ पे and the pole tube nucleus जैसे वहां पे आता है वो degenerate हो जाता है and this cells just get degenerate, the synergid, और ये होती है egg cell. So there is a first fusion over here. एक मेल गमेट यहाँ पे चला जाएगा, zygote would be formed. Here the zygote is formed, it is denoted as a diploid 2n, and the next one will fuse with the central polar nuclei, जिसके पास पहले से 2 न्यूक्लियाई वर प्रेजेंट। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो जाती है 3n वाली, ट्रिप्लॉइड। ऐसा क्यों? Why? फंटास्टिक सुभर गुप्ता, राइट? फंटास्टिक। ऐसा क्यों होता है बेटा? Why is it happening? कि यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्म, यहाँ पे ट्रिप्लॉइड होता है। जैसे ही ये ट्रिप्लॉइड फ्यूजन होता है तो इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 टाइम फ्यूजन हो रहा है। द एंडोस्पर्म इज द स्टोर्ड फूड एंड दैट इज व्हाई इट स्टार्ट्स टू डिवाइड रैपिडली एंड द एंडोस्पर्म विल डेवलप फास्टर देन योर एम्ब्रियो। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट इज द फेट? आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल ऑल फॉल, द पेटल्स ड्रॉप ऑफ, जो भी एंथर्स थे वहां पे वो भी गिर जाएंगे, कोई काम नहीं अभी उनका। द ओवरी टर्न्स टू बी द fruit now and the ovule becomes the seed. The seeds has the cotyledon, right? The plumule becomes the future shoot and radicle becomes the future root. All right? So ovule will form the seed, ovary will form the fruit. इतना याद रखना है यहाँ पे enough है, right? इतना याद रखना है यहाँ पे enough है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yippies! Human being का reproduction we are starting now and are you guys with me? Fantastic! I am starting with the animal reproduction where we talk about the human reproduction, and human reproduction has to start with sexual characteristic, the secondary sexual characteristics, right? Secondary sexual characteristics is something that you have also learned in the grade 8th. So अब during this teenage क्या होता है? 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब tin, right? That is why they are called as the teenage. This age is also called as the adolescence. तो adolescence में क्या होता है ना, बहुत सारी changes हो जाती है, physical changes, mental changes, hormonal changes, reproductive growth, right? आपको शायद सब ने ये सिखाया होगा कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, टीनेज है, यू हैव मूड स्विंग्स, ये वो, लेकिन शायद आपको किसी ने ये बताया हो, शायद ही किसी ने ये बताया हो कि दिस एज दैट यू गाइज आर राइट नाउ इनटू इज द बेस्ट एज फॉर योर ब्रेन डेवलपमेंट। यहाँ पे आप जितनी भी चीजें सीखते हो, यू ट्राई to learn more
and you can grasp them faster than any of the other age in your life. ठीक है? So whatever age is there, ये Spirogyra is multicellular बच्चा, right? So what this is the best of it and utilize it to the fullest. Utilize it to the fullest. Alright? तो अब यहाँ पे मेल्स एंड द फीमेल्स, बॉयज एंड गर्ल्स में अलग अलग टाइप के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि द बॉडी हेयर्स, राइट, बेड थिकनेस, प्यूबिक हेयर्स, द वॉइस चेंज. अमिताभ बच्चन जी का जो वॉइस है ना यार, क्या कहना, राइट? उनका एडम एप्पल भी इतना बड़ा है एंड व्हेन ही सेज हैं, राइट, इट इज so beautiful. So the boys develop this bass voice, right, gradually, एक ही रात में नहीं हो जाता है, right? So voice changes because they develop this Adam apple, larynx बड़ा हो जाता है, that is the reason. The reproductive organ, the penis become large and it is now able to become erectile. Changes in girls, the voice become pitchy, shrilly voice, बहुत लंबी और बहुत दूर तक जा सकती है लड़कियों हमारी आवाज, right? So हमारी आवाज कैसी हो? ऊंची हो, हमेशा be vocal. Then enlargement of the breast are seen so that there is nourishment for the new baby which is generated after the gestational period is over. And menstrual cycle. So onset of menstrual cycle in female is termed as puberty. So puberty is marked by the onset of menstrual cycle. आंसर दे दिया बोट, मैंने आंसर दे दिया. कब का? कि स्पाइरोगायरा मल्टीसेल्युलर होता है बेटा, यूनिसेल्युलर नहीं. ठीक, चलो. सो अब ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात हमने की, अब यहां पे हम बात करेंगे इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन व्हाट आर द स्टेप्स. सो ये है बेसिकली स्टेप्स. ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन human reproduction. So sexual reproduction begins with the gamete formation. In the teenage, the reproductive organs grow. Hi, good evening beta, right? And during this form, gamete formation occurs. Female ovary will start maturing the egg cell and the testes in the males will start producing the sperm cells. Yeah, now the male and female gamete are released from the reproductive part in the female body. They fuse together and that is called as the fertilization process. As a result, zygote is formed. Zygote कैसा है? Zygote diploid है, 2n है. The zygote is a single cell. Then it divides, okay, it divides and it becomes a multicellular cell. Then multicellular structure that is called as an embryo, a mass of cell, that's called as embryo. That embryo now becomes an individual that you are, right? तो ये कहानी है आप सबकी. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे है. तो अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम की, है ना, यहाँ पे आप डायग्राम से बिल्कुल वाकिफ होने चाहिए. यू शुड नो इट थ्रू एंड थ्रू. बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के डायग्रामेटिक क्वेश्चंस तो देखे गए हैं, बट इट हैज रेयरली कम इनटू द एग्जामिनेशन फॉर ड्रॉइंग इट एक्सक्लूसिवली, राइट? सो यहाँ पे व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिकल्स, राइट? द टेस्टिस, pair of testes which are present in the scrotum. Then you have the vasa deferens, जिसे हम seminal duct कहते हैं, vasa deferens, right? And the penis, which is the outer reproductive part of the male reproductive system. Now all of this is in the lower abdomen, and here you are also seeing something called as seminal vesicle and prostates. So these are the accessory organs. इनको हम कहते हैं accessory glands, right? Yes. We'll talk about gametes, beta. Do not worry. Hi Vinod. Good evening and welcome to the class. So, what is the path of the sperm? Part नहीं पूछा है, path पूछा है, and this is a PYQ. ये एक
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, व्हाट इज द पाथ ऑफ स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब वो कहाँ पे जनरेट होता है एंड कहाँ पे उसका फेट होता है, कैसे वो बाहर निकलता है, राइट? We are coming to the same point, Subra, now, okay? We are coming to the same point. जय, स्टोरी स्टार्ट होती है गाइस कहाँ से बताओ? Where is first the sperm production? Sperm production कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। वेरी गुड, तो हमारी कहानी भी वहीं से शुरू होगी। सो सबसे पहले कहाँ पे होता है? टेस्टिस, राइट? टेस्टिस में योर स्पर्म्स वुड बी प्रोड्यूस्ड, right? Sperm production happens, that is why it is called as the main reproductive organ of the male system. Then it goes to the vasa deferens. In between epididymis is there. Epididymis, खैर अगर आपको याद रहे, बोर्ड 10th है आपका तो चलेगा, नहीं भी याद रहा तो epididymis बेसिकली होता क्या है बता दूं. It is just a winded structure of your vasa deferens which stays over the testes. So epididymis, maturing site of your sperms basically. Then it travels to the vasa deferens, right? Vasa deferens, now it connects to the seminal vesicles. Seminal vesicles are the reproductive glands, right? They are the accessory glands of the male reproductive system which will produce certain kind of fluids. Then it goes to the prostate gland. It also produces alkaline fluids which helps to give consistency. So when this fluid mixes with the sperm, it's called as a semen, and then it is actually connected to the urethra, and from the urethra it is passed out of the male body. तो यहाँ पे urethra is the common passage for urine and the reproductive cell. Clear? How to remember it? How to remember it? A very old and simple technique to remember it. 7 up, right? 7 up. So seminiferous tubules. Seminiferous tubules are basically nothing but your testes में होने वाले tubules. Then the epididymis, vasa deferens, ejaculatory ducts, nothing, and urethra out of the penis. That is how you will remember it. Okay, what's the function of scrotum? What is the function of scrotum? A very common question which is asked. Scrotum is a sac-like structure which actually holds the testes outside of the body. Inside the body, the temperature is 37 degrees Celsius, which is quite high for the sperms to develop and produce. Because of which it is kept outside, the temperature where is 1 or 2 degrees lesser, and that's how it helps in the retention and production of sperm in the testes, right? हाँ जी, urethra से urine भी flow होता है, and that's why I said it's a common passage for urine and the sperms. Alright, so now coming to the very important part, that is your hormones. Testosterone is a male reproductive hormone. The male reproductive hormone which is produced by your testes, it also regulates the sperm production. Body को पता कैसे चले कि sperm production कितना होना चाहिए, right? कब नहीं होना चाहिए. So that is for the sperm production. It regulates the sperm production. It also helps in developing your secondary sexual characteristics during the puberty. ये time से लेके adolescence तक, right? आकाश, नहीं समझ में आया मुझे, क्वेश्चन नहीं समझ में आया बेटा. ठीक है, तो ये रहा टेस्टोस्टेरोन का बात.
हमने इसे भी देखा है ना, क्या था ये है आपका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, द प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि है आपका सेमाइनल वेसिकल्स, राइट. सो व्हाट डू यू सी, द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमाइनल वेसिकल, दे डू द secretion in the vasa difference itself, because of which it helps in making the sperm, mixing it into a fluid medium which helps it to get transported. It also take care of the nourishment, gives consistency. The fluid and sperm together is called as semen. Writers, hellos guys, hello. आई बात समझ में कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं. क्रिस्टल क्लियर? एनी डाउट्स? पूछना, ठीक है. डाउट्स अगर आते हैं तो पूछो, सेशन के बाद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आंसर दूंगी. I will answer you guys. I will personally chat with you people on the comment box. Do not worry. Now here यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? Male gametic cell. 3 हिस्से हैं इसके major: head, midpiece and tail. Midpiece is having lot of mitochondria. Headpiece will have your DNA and the tail will help in locomotion inside the female reproductive organ, right? In the female reproductive organ. तो अब बात करते हैं female reproductive organ के बारे में. So the female germ cells are matured in the ovaries. Females का कैसा होता है ना? Thousands some information about the gametes अभी किया ना हमने. These are the gametes. Gametes are nothing but the sperm and the egg cell beta. The fertilizing cells, the reproductive cell जो fertilization में participate करती है. Without the gametes there would be no sexual reproduction happening. All right. अभी females का क्या peculiar thing है? See, in males the gamete formation happens after the maturation. Females में these gametes are present by birth. Ovaries by birth they are present over there, and that is why ovaries when maturity happen they release one egg and each egg is released. It is captured by the fallopian tube. ये ovary है, there are 2 fallopian tubes and each ovary will release one egg alternatively, जिसकी वजह से यहाँ पे the fallopian tube will transfer it towards the uterus. Uterus is a muscular sac, right, which is connected to the cervix and vagina, which are the outer opening of a female reproductive organ. अब fertilization, the fusion of male and female gamete. What is the site? Site of fertilization is the fallopian tube. Once the fertilization is done, the sperms move till here, it fuses with the egg cells, fertilization happens, the egg moves towards the uterus, right? During this time, the cell will divide and get implanted inside the mother body. जैसे ही हम हमारा connection अपने ममा के साथ बना लेते हैं in the uterus pouch, now the mama start giving nourishment and this is the time when you will develop into a fetus. तब आप अपने हाथ, पैर, brain, heart ये सारी चीजें बनाना शुरू कर सकते हो and that's called as a fetus, right? तो development कैसे होता है? Fertilization, right? Zygote formation, zygote का cleavage होगा, 2 cell stage, 4 cell stage बनेगा, 8 cell stage, 16 cell stage बनेगा and so on. Finally at this stage when it comes to a blastocyst, it is getting implanted, तो fetus बन जाता है. इसे हम कहते हैं fetus जहाँ पे organ development चालू हो गया, limbs बन गए and then the baby is developed, right? What's the sac? It is uterus बेटा. It's the uterus. ठीक है, जब ये connection बनता है, so the mother's uterine line, ये जो implantation हो रहा है, it is like a microvilli. इस तरीके से हम connection बना लेते हैं uterus के साथ and now we start deriving the nutrient from the mother side and also give our
waste to her in her blood so that she can filter it out. So she takes care of us for complete 9 months inside the womb and for her life outside it. Right? Fantastic, yaar. I love you, my mom. एक mom के लिए like बनता है यार. Come on. Right? So after the embryogenesis takes place, 9 month का gestation period होता है. The fetus develop all its organ, lungs, and then is the time for the birth. The birth canal is vagina. Vagina से baby बाहर आता है, and it happens because of the contraction. Rhythmic contractions होते हैं, जिसकी वजह से you must have seen in movies and all कि बहुत ज़्यादा pain होता है ना माँ को at the time of labor pains जिसे हम कहते हैं. So that's because of the uterine contraction, and then the babies come out. Right? So what is placenta? This is placenta. Placenta is a disc-shaped organ which actually is like a cushion, and it makes a connection between the uterus and the baby. Right? Fantasticos! There we come to an end, but before that, reproductive health. Reproductive health के दो parameters है. One, to prevent unwanted pregnancies, we have to be aware of this, and other is to prevent STDs, sexually transmitted diseases. Right? Sexually transmitted diseases. So contraceptive के भी दो टाइप होते हैं, natural methods and artificial method. Artificial methods में आते हैं physical, chemical and surgical. ठीक है? So surgical में tubectomy is a permanent type of permanent type of operation. This is non-reversible, but यहाँ से अब unwanted pregnancy को avoid किया जा सकता है. In males, they cut off the vasa deferens, right, so that the sperms do not travel out, right. So इसकी वजह से again, if the sperm is not able to transfer out, there are no chances of fertilization, so no baby. अब ये सारी बातें हो गई हमारी, ठीक है. Surgical method which is permanent. Chemical and physical. Physical में आते हैं the contraceptives like the condoms. These are the only one which can prevent STD. Prevent sexually transmitted diseases. Rest all the other methods are waste to stop the STD. They can help in planning the family only. Alright, what is a fetus? Fetus उसे कहा जाता है when the leg, limb, heart, brain starts to develop. तो जब organs develop होना चालू हो जाता है तब उसे हम fetus कहते हैं. Hope you have enjoyed the session, guys. There are some of the questions. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए in the chat box अभी के अभी. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 13, 17, 18 हर चीज में repetitively अलग अलग तरीके से पूछा गया है. Right? So this is a very important diagram. Maybe they'll not ask you to draw it, but ऐसे diagram आते हैं इस वाले section से किसको अभी label करके पहचान के डालो. ठीक है? अब अरे वाह क्या बात है यार. अब हम मिलेंगे मंडे नाइट्स. तो क्या कल छुट्टी है आपकी? नहीं, कल आपकी छुट्टी नहीं है. मैं आपको एक पेपर सेंड करूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उसे सॉल्व करोगे विद इन द टाइम फ्रेम गिवन. राइट? सो अब यहाँ पे है ट्रायंगल्स जो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये पढ़ाएंगे हमारे सर, फिजिक्स वाले सर, आकाश सर. See you guys tomorrow. This is Deveeka signing off for today. Thank you, Tata. Love you all. Hope you have enjoyed the session. Bye-bye.